Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is origin and domestication of poultry species. First of all, we will understand the term poultry. All the birds that are domesticated and maintained under supervision of mankind. It can also be defined as domestic fowls including chicken, turkey, duck, goose, guinea fowl, pigeon, and ostrich. On the basis of production, poultry can be classified into three types: broiler, layer, and dual purpose. So what is broiler? Broiler is any chicken that is bred and raised for meat production. Similarly, layer is any chicken that is bred and raised for egg production. Whereas the dual purpose poultry is which is raised for both egg and meat production. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे ये थी कि वो बर्ड्स जिनसे हम मीट गोश्त हासिल करते हैं उनको ब्रॉयलर कहते हैं, और वो बर्ड्स जिनसे हम एग्स लेते हैं उनको लेयर कहते हैं, और जिनसे हम मीट और एग्स दोनों लेते हैं उनको हम ड्यूअल पर्पस कहते हैं. While on the basis of origin, poultry can be classified into four types: Asiatic, English, Mediterranean, and American. The Asiatic class includes those breeds which originated in Asian subcontinent. They are less porous. They are poor layers and used for meat production. मतलब एशियाटिक क्लास में जो बर्ड्स आते हैं वो एग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि गोश्त की पैदावार के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये पोअर लेयर्स हैं. While the English class refers a class of chicken originating from England, they are used for both egg and meat production. Mediterranean class includes those breeds which originated in Europe on the side of Mediterranean Sea. They are small and light-bodied and used for egg production. मेडिटेरेनियन सी क्या है, जिसे बहिरा रोम कहते हैं. ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान एक समंदर है. तो उस साइड पे जो यूरोप की तरफ पोल्ट्री है उसको मेडिटेरेनियन क्लास में हम काउंट करते हैं. अमेरिकन क्लास refers a class of chicken originating from America, originating from Canada or United States. They are used for both egg and meat production. So इन चार कैटेगरीज में हमने देखा कि दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें जो पोल्ट्री है वो बोथ एग एंड मीट प्रोडक्शन दोनों के लिए यूज़ होती है. उनमें कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और अमेरिकन. ये दोनों एग और मीट प्रोडक्शन दोनों के लिए यूज़ होती हैं. जबकि जो एशियाटिक क्लास है इसमें जो ब्रीड्स हैं वो ज़्यादातर मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं, और मेडिटेरेनियन क्लास में जो ब्रीड्स हैं वो ज़्यादातर एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं. Scientifically, chickens are classified as kingdom Animalia, phylum Chordata, class Aves, order Galliformes, family Phasianidae, subfamily Phasini, genus Gallus, species Gallus gallus, and subspecies Gallus gallus domesticus.
The history of poultry is a little bit a puzzle, but scholars agree that they were first domesticated from red jungle fowl about 54 years ago, a bird that still runs wild in most of Southeast Asia. 2218 years back, Aristotle also discussed the domestication of chickens in his book, and 2000 years ago, Italians maintained and bred birds. Four species of jungle fowl are recognized. These are red jungle fowl, grey jungle fowl, green jungle fowl, and Ceylon jungle fowl. This is a pictorial demonstration of different species of jungle fowl. In early 18th century, cockfighting was observed in America, but later was banned in 1859. After that, commercial development was started and transportation was done through railway and air shipment. And in early 19th century, development in poultry sector was started with the use of incubator and application of brooders. Improvement in poultry came mainly due to cockfighting, meat production, egg production, exhibition qualities. मतलब पोल्ट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट आई, मतलब लोगों ने जब काक फाइटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने स्पेशल बर्ड्स को सिलेक्शन करते थे, फिर उनकी ब्रीडिंग करवाते थे, इस तरह पोल्ट्री में इम्प्रूवमेंट आती गई। इसी तरह ही जब मीट प्रोडक्शन के लिए जो लोग इसे यूज़ करते थे तो वो बर्ड्स को सिलेक्ट करते थे जो हेल्दी हों, हैवी हों, तो इस तरह पोल्ट्री में इम्प्रूवमेंट आती गई। सिमिलरली इन एग प्रोडक्शन के लिए भी, एग्जीबिशन क्वालिटीज़ के लिए, तो इन सब चीज़ों ने पोल्ट्री में इम्प्रूवमेंट लाई। If we talk about poultry in Pakistan, in early 90s, poultry was kept in lawns as rural poultry to fulfill only the family needs. But in mid 90s, commercial poultry development was started in Pakistan, which showed rapid growth over the decades, mainly due to friendly policies from the government, provision of loans, duty-free import of machinery, availability of feed ingredients, no income tax, and provision of land. As far as the history of Pakistan poultry industry is concerned, before 1963, only native chickens were raised to provide the source of eggs and meat. These birds produce, on an average, 0.769 kg of meat at 4 months of age and lay 30 eggs a year. तो इनकी एफिशिएंसी को आप जज कर सकते हैं नेटिव पोल्ट्री की पाकिस्तान में कि 1 किलो से भी कम मीट 4 महीने की एज के ऊपर, और इसी तरह ही 30 एग्स पूरे 1 साल में, जबकि कमर्शियल पोल्ट्री की अगर हम बात करें तो 2 केजी 5 हफ्ते पे जो ब्रायलर मीट प्रोडक्शन हो रही है, और इस तरह लेयर्स की अगर हम बात करें तो 300 प्लस 350 तक एग्स जो है ना लेयर देती हैं 1 साल में। So these birds were raised as a backyard activity. However, in 1965 to 1966, an improved variety of chicken called Lalpur Silver Black was introduced by the Department of Poultry Husbandry at the University of Agriculture, फैसलाबाद। तो ये एक ब्रीड बनाई गई जो कि 150 एग्स तक तकरीबन इसकी एग प्रोडक्शन होती थी। How this breed was developed? This breed was developed by crossing the native Desi breed with 3 imported breeds, namely White Leghorn, White Cornish, and New
Hampshire. In the mid 1960s, Pakistan International Airlines, in collaboration with Shevar Poultry Breeding Farms of Canada, developed the Pakistan's first commercial hatchery in Karachi. At the same time, Lever Brothers developed the first commercial poultry feed mill in Rahim Yar Khan. This was the today lecture. Thank you very much.